So next topic is kinetic theory of gases and thermodynamics. अगर हम gases की बात करें तो gases have properties different from that of liquids and solids. And the main difference arises because of the intermolecular forces and the resulting potential energy concept. So in gases को लेंगे that the behavior is different. From solids and liquids. On account of intermolecular forces. On account of intermolecular forces in substances. अगर हम intermolecular forces की बात करें तो intermolecular forces are strongest in solids. We say the relative magnitude. Solids में it's maximum. Liquids में less than solids. And then real gases. And for ideal gases, we assume intermolecular forces to be zero. So intermolecular forces means we neglect that there is any kind of attractive force between the molecules. Now, if we correlate it with potential energy, the potential energy of a system we say it's minimum in solids and ideal gases. Ideal gases के लिए this is zero. That means ये सारी जो values and these are negative. Because for ideal gases the potential energy is maximum and it is zero. तो बाकी सबकी zero से कम होगी, so it will be negative. Now if you talk in terms of internal energy, internal energy can be internal kinetic energy, internal potential energy, and total energy. So if we say internal energy, तो इसमें तीन parts हो जाएंगे. Internal kinetic energy, internal potential energy, and total internal energy. Now, when we say internal kinetic energy, at same temperature, internal kinetic energy will be same for all the substances, but potential energy will be different. Now, when we say internal energy for a given temperature, kinetic energy is same for all the substances at a given temperature, but potential energy will be different. Potential energy हम लेंगे it's maximum for ideal gas, it's zero. And minimum for solids. So total internal energy sum of these two, because kinetic energy same है potential maximum gases के लिए. So internal energy total की भी बात करें तो it's maximum for ideal gas.
minimum for solids. Similarly, you can compare the compressed gas and the rarefied gas. अगर हम gases को compare करें, से compressed gas है, rare gas है, तो potential energy for rare gas or compressed gas, rare gas it's more, and for compressed gas it's large. For compressed gas. So these are the basic internal energy and total energy concepts for gases. Next is कि ideal gas होती क्या? Ideal gas concept is that it obeys gas laws at all temperature and all pressures. Which obeys gas law at all values of temperature and pressure. Intermolecular force is neglected, intermolecular potential energy is neglected. So potential energy for ideal gas is zero. Ideal gas की specific heat को लेते हैं, does not vary with temperature. Intermolecular forces and potential energy is zero. Specific heat of ideal gas does not vary with temperature. Whereas for real gases, specific heat varies with temperature at low temperatures. Specific heat varies with temperature. अगर मैं graphically show करूं, so for ideal gas, specific heat does not vary. With temperature, it remains constant. Whereas if you draw for real gases, CV becomes constant only at high temperature. So we say at high temperature, specific heat starts behaving, the gases starts behaving as an ideal gas. So we say at high temperature and low pressure, real gases starts behaving as ideal gases. As ideal gas. अगर हम expansion coefficients की बात करें, volume expansion coefficient और pressure expansion coefficient. Volume expansion coefficient means change in volume per unit to regional volume and per degree rise in temperature. So volume expansion coefficient and pressure expansion coefficient, it will be same 1/273 for ideal gases.
गामा जो हमने लिखा था फॉर आइडियल गैसेस, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, गामा is 1/273 per degree Celsius. So on the basis of these assumptions, हमने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया आइडियल गैस इक्वेशन से, एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? We can write in different form. Can say PV is equals to nRT. N is the number of moles. The number of moles is mass upon molar mass. Mass is number of moles. You can say it's capital N. We can write this as R naught is N naught is Avogadro's number. So NKD. So these are the forms of ideal gas which we will use. Law जो हमने किए थे, first was Boyle's law. Boyle's law is that constant mass of gas and constant temperature. Pressure is inversely proportional to volume. Constant mass of gas and constant temperature. Pressure exerted by gas I can say that PV is equals to constant. So constant temperature पे और constant mass of gas पे PV का product constant है. हम 3 ग्राफ बना सकते हैं. अगर हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाएंगे, if you take PV on this axis, because pressure वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है that remains constant. इस केस में जो स्लोप होगी whenever pressure volume curve is drawn, and dp by dv की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं. So dp by dv gives you the slope of the graph. So इस केस में शो कर रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा. That is basically Boyle's law at constant temperature. Next is Charles' law. For constant mass of gas and constant pressure. Volume of gas is directly proportional to
temperature of V by T is constant. V by T is constant मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है. टेम्परेचर को अगर हम केल्विन में लेंगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. But V by T does not depend on volume or temperature. So V by T की वैल्यू सेम रहेगी. इस केस में जो स्लोप होगी that will be given by dV by dt. That how the volume of a gas varies with temperature. Constant slope आएगी dV by dt की वैल्यू. So these are the two main laws. Then you have Gay-Lussac. Gay-Lussac is at constant volume and mass, pressure is directly proportional to temperature. So it will be a straight line graph. P by T की वैल्यू ना तो प्रेशर के साथ वेरी करेगी ना टेम्परेचर के साथ. से तो नॉर्मल गैस लॉज यूज होंगे. अब दो लॉ और या एक लॉ मेन और एवोगैड्रोस लॉ. बट एवोगैड्रोस लॉ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत कम यूज होगा. कि under identical conditions of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of molecules. But it's more used in chemistry than in physics. So physics में उसका use negligible है कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आते. Pressure exerted by gas पे आएंगे. Pressure exerted is calculated in terms of RMS velocity. और फिर एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल पे आ सकता है या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे आ सकते हैं. सो अगर हम पहले प्रेशर का एक्सप्रेशन लें. Pressure is exerted because gas molecule collides with the wall. Gas molecule collides with the wall and the momentum changes. Collisions are assumed to be elastic. कि elastically collide करेंगे and number of collisions per unit time. They will determine the pressure which is exerted on the wall. So normal हम लेंगे कि pressure exerted by gases. Where rho is density and c is RMS velocity. So you can also write it as c square is equals to for 1 mole of a gas.
PV will be equals to RT and M will be molar mass. So अगर हम ये दोनों substitution कर देंगे तो C comes out to be. There is also kinetic interpretation of temperature कि अगर temperature 0 Kelvin है, the motion ceases. C will also be 0. At 0 Kelvin, molecular motion ceases. This is sometimes also referred as kinetic interpretation of temperature. Or you can say kinetic energies. Absolute temperature. So इसको हम लेते हैं, this is kinetic interpretation of temperature, that kinetic energy is directly proportional to the temperature. अब kinetic energy जो gas की होगी, that basically depends on the number of ways a motion can exist, या the number of independent coordinates required. So उसको हम degrees of freedom की term में ले लेते हैं कि degrees of freedom जितनी होंगी उतनी kinetic energy भी होगी. And kinetic energy is given by Maxwell's concept. कि Maxwell का concept था law of equipartition of energy, that energy is equally divided among all the degrees of freedom. And energy per degree of freedom per molecule is half kT. Equipartition means equally divided. Energy is equally divided among all the degrees of freedom. Energy per degree of freedom per molecule is half kT. K is Boltzmann constant, or per degree of freedom per mole. जैसे मोनोटॉमिक गैस है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगी 3/2 RT. Diatomic gas at low temperature. Five degrees of freedom, so energy will be. And at high temperature, diatomic gas is 7 degrees of freedom. Seven by 2 RT. So these are the kinetic interpretation ki how the energy is divided among different degrees of freedom. And then अगर तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, RMS speed, mean speed और most probable speed. RMS speed will be
8 RT upon pi m, and most probable speed is 2 RT by m. हर केस में कोई भी स्पीड निकाल रहे हो, स्पीड इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. सो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूलाज हैं जो हमारे यूज होंगे डिफरेंट केसेस में. नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स को अगर हम करें, so thermodynamics हम लेते हैं branch of physics which deals with the macroscopic behavior rather than studying the individual particles. We'll study the group कि thermodynamic system है कि any system under consideration, और जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हम उनको स्टडी करेंगे. जो हमारा सिस्टम कंसिडरेशन में उसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो होगा दैट विल बी द सराउंडिंग्स. दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस सिस्टम होगा विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड, दैट्स अ होमोजीनियस सिस्टम. और हेट्रोजीनियस होगा वेयर द सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म, लाइक टू एमिसिबल लिक्विड्स को अगर मिक्स किया, so that is a heterogeneous system in thermodynamics. So दो system is anything under consideration जिसमें हम thermodynamic variables को study करेंगे, और दो तरह के system हो सकते हैं. This is uniform throughout, the same density, same viscosities, properties are similar. For example, pure liquid. The system is not uniform. For example, mixture of two immiscible liquids. That's an heterogeneous system. नॉर्मली हम होमोजेनियस सिस्टम के साथ ही ज्यादा डील करेंगे, हेट्रोजीनियस के साथ हम कम करेंगे. सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं. फर्स्ट इसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, आपको पता है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. देन यू हैव ज़ेरथ लॉ. ज़ेरथ लॉ डील्स विद टेम्परेचर ओनली. ज़ेरथ लॉ सेज कि अगर हमारे पास दो थर्मोडायनामिक सिस्टम हैं A and B which are in thermal contact with a third system C, कि हमारे पास ऐसे एक से बॉक्स है. डबल वॉल मींस इट्स एन इंसुलेटर. तीन सिस्टम है A, B एंड C. डबल वॉल इंसुलेशन होती है. That's a convention. Single wall is conductor. A और C के बीच में कंडक्शन पॉसिबल है, B और C के बीच में A और B आर दे आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग वॉल. Now Zeroth law says कि अगर A जो है it's in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then A and B are also in thermal equilibrium. If A and B third system C
then they must be in thermal equilibrium with each other also. Simple law है बेसिकली. इसका मतलब ये है कि अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का सेम है, कि ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का सेम है, तो ए और बी का भी सेम टेम्परेचर ही होगा. सो दैट्स कि ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम है. B is also in thermal equilibrium with C, means B और C का टेम्परेचर सेम है, तो दिस implies कि A और B का टेम्परेचर भी सेम ही होगा. So thermodynamics जब हम शुरू करेंगे तो we will deal with three quantities basically: internal energy, heat energy and work. Internal energy अगर हम gases की बात करें तो gases के पास सिर्फ kinetic energy होती है, but solid and liquids have internal energy due to both motion as well as configuration. So अगर internal energy को define करना है so we can say that internal energy is energy possessed by a system due to its molecular motion and molecular configuration. Energy possessed by a system due to its molecular position और motion दोनों के कारण जो होगी gases. So internal energy is only due to motion. Internal energy is only due to motion, but otherwise it's basically motion as well as configuration. आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी अगर आपने internal energy निकालनी है. Normally when internal energy increases, so we take change in internal energy to be positive. If internal energy decreases, we take change in internal energy to be negative. Similarly, work done. Chemistry is a different. Work done by the system is positive. Work done on the system is negative. Heat energy gained by the system is positive. Heat energy lost is negative. So ये हम standard sign convention पूरे chapter में use करेंगे. अगर हमें को change in internal energy लिखना है, this is change in internal energy due to kinetic energy du. This sign convention. गैसेस के लिए हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. Negative if internal energy decreases. Work is done by the system
is positive, work done on the system is negative. Heat energy gained. And heat energy lost is taken as negative. Heat energy gained is positive and heat energy lost is negative. So first law of thermodynamics जो आएगा, that is basically the correlation between these three quantities. We can say that whenever you supply energy to the system or whenever some change in energy takes place in the heat content of the system, dq change karega, so that will always be equals to the sum of change in internal energy plus work done. So that's the law of conservation of energy कि dq is equal to du plus dw. So उसके बेस पे हम आगे रिलेशन कर सकते हैं, बट उससे पहले अगर हम एक पीवी डायग्राम करें, पीवी डायग्राम इज द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस विद प्रेशर या प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन अगर हमने प्लॉट करनी है. अगर हम प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन प्लॉट करें, इट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द वर्क डन. Pressure is plotted on y-axis. Volume is plotted on x-axis. So P1, V1 represents initial state of the system. P2, V2 represents the final state. और अगर हम area under the graph लें, this represents the work done. For expansion, work done will be positive, and for compression, work done will be negative. कि expansion है तो इसमें work done positive आएगा, because इसमें हम show कर रहे हैं कि volume बढ़ रहा है, system moves from A to B. So we say area under the graph is measure of work done. If volume changes from V1 to V2, then PdV is the work done. For expansion, so the volume decrease कर रहा है, मतलब work is done on the gas. So positive work is done if volume increases and negative work is done if volume decreases. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए हम ग्राफ बनाएं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बनेगा ग्राफ? We can say for isochoric process,
वॉल्यूम कांस्टेंट है, because volume is not changing, work done is zero and slope will be infinite. अगर मैं वॉल्यूम को दूसरे एक्सिस पे प्लॉट करता, so this will be the graph कि volume remains constant, pressure changes from P1 to P2. So we say area under graph is zero. Slope dp by dv is infinite. Whereas अगर cyclic process होता है where the system returns to its initial state after passing through number of intermediate state कि जहां से शुरू होगा सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम वहीं पे वापस आ जाएगा, तो जो पीवी ग्राफ बनेगा that will be a closed curve. Intermediate state can be same or different. Path followed की अगर हम बात करें, this is system returns to its initial state like अगर मैं ग्राफ बनाऊं, system moves from A to B through some path. So first, and then it returns from B to A through some other path. Or you can have a process like A to B, B to C, C to D, and back to A. Because internal energy is a state function. Whenever system returns to its initial state, change in internal energy will always be zero. Whenever the system returns delta U for cyclic process will always be zero. Work done can be positive or negative. इसको अगर हम देखें तो this is considered a clockwise process. So clockwise process में work done negative, anti-clockwise होता तो negative. ये भी clockwise ही है. अगर ऐसे process होता तो it would be negative work. Work done can be positive or negative in a cyclic process. So, but change in internal energy हमेशा zero होगी. Work done positive है तो heat has to be added. इस केस में delta Q भी positive आएगा.
वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब हीट एनर्जी रिमूव की, पॉजिटिव मतलब आपको हीट एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट लॉ को हम लेते हैं, इट्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइन कन्वेंशन जो हमने पीछे यूज की थी, this basically implies that whenever there is some change in heat content of the system dq, it will be equals to sum of du and work done। कि जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज होगा एंड रिमेनिंग विल बी यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। सो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिख सकते हैं। लाइक इफ यू टेक द केस ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग में होगा कि जब बॉयल करेंगे तो liquid changes to gas, liquid changes to gas, तो there results in large change in volume। आपको जो हीट एनर्जी चाहिए वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और वो वर्क भी करेगी। बट अगर मेल्टिंग प्रोसेस है, व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड द चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, तो जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी। से अगर मैं मेल्टिंग के लिए लिखूं, चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, मतलब जो वर्क डन है दैट इज और dw इज 0। dq is equals to du and energy required for melting dq is ml, मतलब जो भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो दैट इज चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। सेम टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है अगर स्टेट चेंज हो रही है, बिकॉज सॉलिड की इंटरनल एनर्जी कम होगी और लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल्स टू ml। बट अगर हम बॉइलिंग प्रोसेस लेते हैं, as liquid changes to gas there is large change in volume। dq is latent heat of vaporization, यहाँ पे जो it is latent heat of fusion। First law is you can say du is so this first law of thermodynamics for boiling process। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ लिखेंगे, आइसोकोरिक इज वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0। अगर वर्क डन 0 हो जाएगा implies all the heat energy supplied will be used for changing internal energy only।
That's why closed container में cooking faster होती है because work done 0 है. So जो भी आप heat energy supply कर रहे हो, that will increase the temperature only. For changing internal energy only, that is dq will be equals to du. अगर isothermal process होगा, isothermal process में temperature constant है, तो internal energy change जो है वो constant रहेगा, 0 हो जाएगा. कि अगर हम gases की बात करें, normal gases के साथ ही deal करेंगे. Constant temperature. du is equals to 0. That means dq is equals to dw. इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था. दिस इज 2.303 nRT log V2 by V1 और isothermal process is normally represented as PV diagram में. Temperature constant at T. And slope of graph, it's variable. So slope of graph is minus P by V. Isothermal के लिए condition होती है that isothermal processes are generally slow. So that time is available for exchange of heat. For exchange of heat between system and surroundings. And walls of container should be conducting. So ये condition है. So next is adiabatic process करेंगे, उसमें work done थोड़े से और formula and heat engine. So अगले lecture में वो recording करते हैं.